warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in our previous lecture, we discussed spermatogenesis. In spermatogenesis, we discussed that it takes place in the seminiferous tubules of the testes, that is, seminiferous tubules, or the fundamental units of the testes. Then then in spermatogenesis, we discussed that the entire process of spermatogenesis can be divided into two stages. It is the formation of spermatids and spermiogenesis. In our previous lecture, we discussed the formation of spermatids, which is completed in three sub phases: multiplication phase, then growth phase, and finally the maturation phase, in which the spermatids are developed by the process of meiosis. You have learned how the haploid spermatozoa are formed from the diploid sperm mother cells, या spermatogonia. Although in that lecture, in our previous lecture, we discussed briefly the process of spermiogenesis, that is how the non-motile spermatids get transformed into spermatozoa. But in that lecture, we did not discuss the changes which take place during the differentiation of the spermatid into spermatozoa in detail. In this lecture, we will discuss the changes, those changes which take place during the differentiation of the spermatid into spermatozoa. You know that the spermatid, which is a haploid cell, spermatid is a haploid cell, but it contains nucleus, it contains Golgi body, it contains mitochondria, and it contains centriole. Because of all these organelles present in the spermatid, it is very heavy. There needs to be it needs some reformations, it needs some changes to undergo, so that this non-motile spermatid gets transformed into a haploid and motile spermatozoa. And you will see that during differentiation, during the process of transformation of the spermatid into spermatozoa, all these organelles, that is nucleus, Golgi body, mitochondria, centriole, these organelles get modified. These organelles undergo various changes. What are the changes which take place in these organelles? We will discuss here one by one. Starting from the nucleus. Nucleus gradually decreases in size by losing water. इसका nucleus जो होता है spermatid का, इसका size decrease हो जाता है. इसका size decrease हो जाता है. कैसे decrease हो जाता है? By losing water. Number one. Number two, उसके जो chromosomes होते हैं, they become concentrated. Chromosomes become closely packed. Chromosomes become concentrated and closely पैक्ड. इसके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनको वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, क्लोज पैकिंग हो जाती है उनकी. और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसमें स्पर्मेटिड की जो इसका जो आरएनए होता है, इसमें जो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, इसका जो न्यूक्लियोलस होता है, ऑल दीज ऑर्गेनेल्स डिसअपियर. ये क्या होते हैं? इसका आरएनए, इसमें जो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, वो डिसअपियर हो जाते हैं. और न्यूक्लियस जो होता है इन मैमल्स, न्यूक्लियस इट बिकम्स इलोंगेटेड. फिर then there is one more organelle, that is Golgi body, Golgi complex. Golgi complex, it forms a acrosome. Acrosome together with the nucleus. Acrosome together with the nucleus, this forms the sperm head. And you know it is acrosome which contains the lysosome containing various lysine enzymes which are needed during the process of fertilization. और spermatid, इसका जो सेंट्रोजोम होता है स्पर्मेटिड का, इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं. स्पर्मेटिड के सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं.
और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं, these centrioles move towards the nucleus. ये किसकी ओर चलते हैं, किसकी ओर माइग्रेट करते हैं? these migrate towards the nucleus and finally occupy the position behind the nucleus. ये न्यूक्लियस के पीछे अपनी जगह बनाते हैं and then in the posterior surface of nucleus, न्यूक्लियस के posterior surface पे एक डिप्रेशन डेवलप होती है. न्यूक्लियस के पोस्टीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन डेवलप होती है. उसी उसी डिप्रेशन में दो सेंट्रियोल्स में से एक सेंट्रियोल प्लेस होता है और ये सेंट्रियोल विच इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन, इसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. अदर सेंट्रियोल, जो दूसरा सेंट्रियोल है, वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे आ जाता है. उस सेंट्रियोल को कहते हैं हम दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल. क्या कहते हैं इसको? डिस्टल सेंट्रियोल्स. तो दो सेंट्रियोल्स में से एक सेंट्रियोल जो है that comes to lie in the depression which is developed in the posterior surface of the nucleus, इस centriole को कहते हैं proximal centriole. The second centriole comes to lie behind the proximal centriole and this centriole is known as the distal centriole. One more thing, जो distal centriole है, distal centriole develops into a axial filament. Distal centriole जो है, it develops into an axial filament. Mitochondria, mitochondria is aggregated. Mitochondria जो spermatid का है, ये entire spermatid का जो mitochondria है, it aggregates together, form a large mass, large mass बनाता है in the region of the centrioles. उस mass को कहते हैं mitochondrial cloud. उसको कहते हैं mitochondrial cloud. और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड जो है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड spirally, it becomes spirally coiled around the axial filament. जो मिडिल पीस है उसमें याद रखिएगा, उसमें डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट के बिल्कुल इर्द गिर्द ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड जो है, इट बिकम्स स्पाइरली coiled around the axial filament. इस रीजन को जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल रिपल लाइक स्पाइरल बनाता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं निबंकर्ण. इसको कहते हैं निबंकर्ण. और साइटोप्लाज्म जो है, इट बिकम्स कंडेंस्ड. साइटोप्लाज्म फॉर्म्स द कंडेंस्ड sheath. Cytoplasm forms the condensed sheath around the around this middle piece. This condensed sheath of the cytoplasm, this condensed sheath of the mytoplasm is known as manchet. इसको कहते हैं manchet. When spermatozoa are developing, याद रखिएगा, जब स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहे होते हैं, उस दौरान जो स्पर्मेटोजोआ, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ का जो हेड रीजन होता है, उसका हेड जो होता है, that gets embedded in the cytoplasm of the Sertoli cells. You have learned in your previous lecture that in the seminiferous tubules there are two types of cells. There are larger cells and there are some smaller cells. Smaller cells are these germ cells, primordial germ cells, and the larger cells are known as the Sertoli cells. These are the Sertoli cells which give nourishment to the developing spermatozoa. जो developing spermatozoa होते हैं, उनके head regions कहाँ embed हो जाते हैं? इनके अंदर, Sertoli cells के अंदर. जबकि tail जो है, tails are these protrude into the lumen of the seminiferous tubule. Why it is so? In order to obtain the nourishment from the seminiferous, from this Sertoli cells. Then fully matured sperm, it is released. जब ये fully mature हो जाता है spermatozoa, it is released from the from these Sertoli cells, and by the ciliary movement of vasa afferentia, these are carried away to the vas deferens और store हो जाते हैं ये seminal vesicles में.
टेम्पररी स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, फिर जब जरूरत पड़ती है दीज आर रिलीज। और यहाँ से जो रिलीज होते हैं स्पर्मेटोजोआ, these although this it is structurally modified, it is structurally modified to act as a spermatozoa, but it has not the capacity, the potential to fertilize the egg. ये potential, fertilizing capacity जो ये achieve करता है, attain करता है, ये ability जो ये attain करता है egg को fertilize करने की, उस प्रोसेस को कहते हैं, इट इज बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं फिजियोलॉजिकल राइपनिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं फिजियोलॉजिकल राइपनिंग। And this physiological ripening in case of mammals it takes place in epididymis। तो हम कह सकते हैं जब तक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होता है ये स्पर्मेटोजोआ, it is not able to fertilize the egg। तो ये fertilizing ability, ये potential ये attain करता है in the epididymis, but in frogs this potential is achieved, this physiological ripening takes place only in seminiferous tubules itself। This is how spermiogenesis takes place, how metamorphosis of spermatid takes place into spermatozoa. Now, there is one and the last uh, point regarding the entire process of the spermiogenesis. That is how this entire how this entire process of spermatogenesis is controlled. What is the hormonal regulation of the entire process of the spermatogenesis? Hormonal control of spermatogenesis. Dear students, you know there is a master gland known as hypothalamus. Hypothalamus. This hypothalamus releases a hormone, उस हार्मोन को कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, anterior lobe of pituitary gland। You know there are two parts of the pituitary gland, anterior lobe and the posterior lobe. There are two lobes, anterior lobe and posterior lobe. The gonadotrophin hormone, which is released from the hypothalamus, acts on the anterior lobe of pituitary gland. This anterior lobe of pituitary gland secretes two hormones. Secretes two hormones. Number one, FSH and LH. Follicle stimulating hormone, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone। LH या luteinizing hormone जो है, it acts on the Leydig cells। If you remember the section of the testes, there are seminiferous tubules, there are number of seminiferous tubules, in between the seminiferous tubules there are some small cells, those cells are known as Leydig cells या उनको हम कहते हैं interstitial cells भी। The luteinizing hormone which is secreted
from the anterior pituitary gland by the action of the gonadotrophin release hormone secreted from hypothalamus activates these Leydig cells. ये Leydig cells को luteinizing hormone Leydig cells को stimulate करता है या Leydig cells को activate करता है. Leydig cells जो है these secrete one more hormone, that is androgen. उसको कहते हैं androgen. एंड्रोजन या हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. द एफएसएच और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स. ये मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन जो है it stimulates the process of spermatogenesis. It stimulates the process of spermatogenesis. It has two important functions. One, it stimulates the development of primary sex organs, and it stimulates the process of spermatogenesis. The FSH or follicle stimulating hormone from the anterior pituitary gland stimulates the it activates Sertoli cells. It acts on the Sertoli cells to so that these in here in Sertoli cells spermiogenesis will take place. Spermiogenesis we were just discussing is controlled by the FSH or follicle stimulating hormone. That is all. Thank you.